BJP's prime ministerial nominee, he's reacted to the court verdict. Satyameva Jayate, truth alone triumphs. That's Modi's first reaction. Let's go across to Tavleen, getting us details of what the BJP camp is saying this evening. Over to you, Tavleen. All right, before we go across to Tavleen, let's also tell our viewers that he's crossed the last hurdle as far as 2002 is concerned. A big relief for the Gujarat Chief Minister Narendra Modi ahead of the general elections after an Ahmedabad court upheld the SIT report, giving a clean sheet to Narendra Modi. Tavleen joining us with details of what the BJP camp is saying this evening and also about what Narendra Modi has said. Yes, in fact, 3 words have come in from Narendra Modi, who is in the center of controversy as far as this case is concerned. And he has stated very clearly that truth always triumphs. We've seen the stand of the BJP saying that all the campaign by the Congress party and very vocally all the senior leaders have spoken, including the leader of opposition, Rajya Sabha, Mr. Arun Jaitley, stating that Congress and their friends and some NGOs have been politically, all these moves have been politically motivated. And the fact is that Congress has failed to fight Narendra Modi, politically. जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गुजरात के दंगों की जांच कर रही थी, उसकी रिपोर्ट और सिफारिशों को स्वीकार किया है और उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट पिटीशन थी उसको खारिज किया है। इस निर्णय से एक बार पुनः यह साबित हो जाता है कि सत्य और असत्य के बीच में जो एक बुनियादी अंतर है वो यही है कि सत्य के साथ जुड़े हुए सब तथ्य स्पष्ट रहते हैं और एक भाषा बोलते हैं। असत्य बिखर जाता है। Truth always holds together and falsehood will fall apart. Ahmedabad Metropolitan Magistrate has rejected the petition filed by Zakia Zafri challenging the closure report filed by SIT. What would be the next step from Zafri family? To talk more on that, I am joined by Mr. Tanveer Zafri. Tanveer ji, big disappointment for you and your family? It is a disappointment, but I would not say big. Please remove the word big. It is a disappointment, a temporary setback. Because a lot of efforts we have put since last 2006, when my mother first approached the Supreme Court to requesting Supreme Court to consider charging a case against the Chief Minister and other accused, which is other person whom my mother is named in her petition. Since then, it has been a lot of efforts have gone into bringing the fact in front of the Supreme Court as well as the lower court now. So, we had put up evidences in the form of the state intelligence records, of police control room records, and the affidavits of IPS officers which are currently also in government. And we felt that there are enough evidence and the court should not have rejected, but it is rejected, so it is a temporary setback. इलेक्शन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने वो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। आगे जहाँ पर जाने का है मुझे वहाँ पर मैं केस करूँगी। तो आप मतलब हाई कोर्ट में जाएंगे? मैं हाथ पर आगे जाएंगे। आगे वाले कोर्ट में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन से कोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं वहाँ जाके मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। राकेश जी, आप मानते हैं कि कोर्ट ने आपने जो सबूत पेश किए थे उस पर आपको जस्टिस नहीं मिला, ये आप मानते हैं क्या? वो तो अब अभी आज जो मेरे को रिजल्ट मेरा आया है तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हुआ, मतलब के नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके पास जितने सारे जो कहा जा रहा था कि मतलब एविडेंसेस हैं वो सबको दरकिनार कर दिया गया आज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अभी नहीं तो फिर कभी वो आएगा तो सही जरूरी। My only statement is, as a citizen for justice and peace that has supported this complaint and will support this fight further, that we are hugely disappointed at the fact that huge voluminous evidence collected by SIT and produced to the evidence records has been ignored by the judge. We believe that a case of mass criminal conspiracy, abetment to commit murder, destruction of records, arson, etc. took place all over the state of Gujarat in 2002. We stand by that. And we are hugely disappointed with today's verdict. We will have to go through the rationale for the rejection, but we will appeal 100% in the shortest period of time.
अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अभी जो चुकादा दिया है वो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते थे उस तरह का ही चुकादा है, लेकिन जस्टिस का मिसकैरेज हुआ है, न्याय नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जो 2002 के दंगा पीड़ित थे, जो उनके फैमिलीज हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ और सच बाहर नहीं आ पाया है। ये हमारे तंत्र की कमनसीबी है। SIT ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से गुनहगारों को बचाने की कोशिश की, वो पूरी बातें कोर्ट के समक्ष शायद ठीक से रखी नहीं गई, या तो शायद कोर्ट वो पूरी चीज़ों का अप्रिशिएट नहीं कर पाई। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में मेरे ख्याल से ये जस्टिस का सबसे बड़ा मिसकैरेज होगा।